non-enthalpy of atomization, combustion, bond enthalpy, relationship we have done. This you're right. Enthalpies of physical transformation. Enthalpies of physical transformation. Okay. Now, very slightly, I'm going to discuss these things. So, first is solid to liquid. This is known as enthalpy of fusion. Okay. Or you can write it as delta H naught FUS. In this case, 1 mole of solid is converted to liquid. Second is liquid to gas. This is known as enthalpy or standard enthalpy of vaporization. Okay. Here 1 mole of liquid is converted to gas. Third is solid to gas. This is known as enthalpy of sublimation. Here 1 mole of solid is converted to gas. Now, there are 2 more enthalpies. Physical transformation, that is enthalpy of hydration. Enthalpy of hydration. Okay. What is enthalpy of hydration? It is basically this enthalpy change when 1 mole of gaseous ion is hydrated in water. After this, you will write enthalpy of hydration, and then you will write enthalpy of dilution. It is the enthalpy change when specific amount solute is added to specific amount of solvent. Now, in general, enthalpy of dilution is not generally asked in the cases of न्यूमेरिकल्स है ना. तो डायरेक्ट अगर आपको सवाल पूछना रहेगा व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन देन दे कैन आस्क. अदरवाइज इसके लिए कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है. एज यू कैन सी दैट इज व्हाई दे आर नॉट. I hope you have written till here. After this, you will write a topic that is more important. It is lattice enthalpy. Now, please write about lattice enthalpy. The So enthalpy. can you go back to Yeah, the sure. fifth one? Write this down. Raise your hand once you're done. Noha, you're done?
lattice enthalpy. Please write the enthalpy change when 1 mole of an ionic compound dissociates into its ions in gaseous state. Into its gaseous state. So basically, there is one lattice enthalpy that we have to study. That is sodium chloride, which is in solid state. If you are going to break it into sodium positive in gaseous state plus Cl negative in gaseous state. Now, whatever enthalpy is required, whatever energy or whatever heat change is required here, that is known as lattice enthalpy, delta H lattice. Okay. Now, there is a way in order to calculate it, not determine, not measure it. Rather, what you can do, you can calculate the lattice enthalpy. Okay. How are we going to calculate the lattice enthalpy? इसको यहां तक आप लिख लीजिए इस रिएक्शन को, and then raise your hand once you're writing this. Once you have written these lines and then the reaction, then I will tell you how we calculate it, not determine, not measure. ठीक है? We even without breaking 1 mole of NaCl, we can determine what is the lattice enthalpy of NaCl. Waiting for Amna and Rishita. Waiting for Rishita now. Nothing here. Okay, I will write a reaction that is sodium, which is in solid state, okay, plus half moles of Cl2 will give me 1 mole of NaCl solid. Okay. Now, if you look at this reaction is actually the enthalpy of formation of NaCl. We are forming 1 mole of NaCl. Now, so I can say that this reaction is what? This reaction is delta H naught formation of what? NaCl. Make sense, everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Moving on. If I convert sodium solid to sodium gas, okay, sodium solid to sodium gas. Now this will require some kind of energy, and that energy I can say that it is sublimation. Delta H naught sublimation, or we can call it also atomization. Both are the same thing when you are going from solid to gas. And atomization में क्या होता है? The product is a gaseous atom, no matter what the reactant is. And in sublimation, what happens? We go from solid to gas. So in this case, the sodium solid to gas we are going. So you can represent it by delta H sublimation or delta H atomization, both of these things. Next is we have, let us suppose, sodium positive in gaseous state. Now, when you remove 1 electron from neutral isolated gaseous atom, the energy required is known as ionization enthalpy. So this is your neutral isolated gaseous atom.
from here you are removing one electron. That means this particular change will be shown as ionization enthalpy, delta H I. Now let us move on to Cl2. Cl2 को जब आप convert करेंगे, first of all you can convert Cl2 to Cl gas. Now what is happening here? We are breaking the Cl-Cl bond. Here we have taken half moles of Cl2. That means there are half moles of Cl2 bonds, and the energy required in this process will be equal to the bond enthalpy of Cl-Cl bond divided by 2. Because when we talk about bond enthalpy of Cl-Cl bond, we are talking about the energy required to break 1 mole of Cl-Cl bonds. Since we have half moles of Cl2, that means we are breaking half moles of Cl-Cl bond. That is right, divided by 2. Now, after this, on this chlorine gaseous atom, neutral isolated gaseous atom, I will add one electron and I will get Cl negative gas. Now, the energy required in this particular process will be known as electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Okay. Now, what we can do from these process, I can make the energy required in order to break NaCl to Na plus and Cl negative. It is known as what? Delta H lattice. This is something that we have studied right now. Now, I need to calculate the value of enthalpy, the lattice enthalpy. In order to reach lattice enthalpy, I don't know this value, no? I don't know this value, but I know the starting point. Starting point kya hai? NaCl solid, and the end point for delta H lattice is Na positive and Cl negative. So if the path does not matter, no? Starting point or ending point matter, because we are looking at delta. Delta means change, final minus initial. So I don't know this lattice enthalpy, but I can go from NaCl to Na plus and Cl negative via this pathway. ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा. Na पॉजिटिव से पहले आपने इधर गए, एरो क्या आपने उल्टा लिया. You can see that what I'm going to be doing. From NaCl, I'm going to Na and half Cl2. So the enthalpy of formation ka negative value, because we are going in the opposite direction of enthalpy of formation. Then after, once we have got sodium and half Cl2, we have to go from delta H naught sublimation. And after that, delta H ionization. Cl2 ke liye, half of bond enthalpy of Cl2, and then electron gain enthalpy of Cl. So we will get Na positive and Cl negative. Now, what I can write, the lattice enthalpy, delta H lattice, is equal to minus of delta H naught formation, इसका NaCl का, ठीक है, प्लस Na को ले लें अगर हम, तो delta H naught sublimation, after that delta H naught ionization plus delta H naught Cl2 divided by 2, the bond enthalpy of chlorine, plus delta H Eg. Okay, so the sum of all of these enthalpy change will be equal to lattice enthalpy. This is because no matter what pathway you are choosing, if the start and the end products, or the starting, the state of the system initially and the state of the system at the end finally is same, then no matter what pathway you're using, it is independent of the path. The enthalpy change, the change in internal energy, these are independent of the path we are taking. That is why we can calculate lattice enthalpy. If we know the values of these terms and these values, then we can easily determine or calculate lattice enthalpy. We don't even have to do any reaction. Okay? So now this will save a lot of money. Whenever we are having this type of formulas, it is going to save you a lot of money. First of all, you don't have to destroy NaCl. Secondly, there will be a huge amount of money that will be spent in the instrumentation, because we have to break NaCl in a very controlled environment, such that whatever energy we are spending or whatever energy is required to break NaCl, all of those energies are being measured, और उसमें से कोई भी एनर्जी ऐसा नहीं जा रहा है जो मेजर ना हो. So measuring is a very expensive, what I can say, measuring is a very expensive thing to do. ठीक है, इसी वजह से आप देखिएगा जो भी टेस्ट्स होते हैं ना, शुगर का टेस्ट होता है, उसके बाद बाकी सारी चीजों के जो टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. व्हाई?
because measurement of something is very difficult. ठीक है, इवन तो उतना लगता नहीं ये चीज, बट मेजरमेंट ऑफ समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट. दैट इज व्हाई वी हैव अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इन साइंस. फॉर्मूलाज दे सेव अस व्हाट. इनिशियली आपको पेजेस लग रहे हैं, इट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग सम माइंड, है ना, कुछ आपका टाइम भी जा रहा है, बट मनी इज सेव. एंड इन द लॉन्ग रन द फॉर्मूलाज आर अ चीपर वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग. ठीक है. डिड यू गाइस अंडरस्टूड हाउ टू calculate the lattice? How did we calculate the lattice enthalpy of NaCl? Yes or no? Tell me. Yes, sir. ठीक है, प्लीज कॉपी दिस डाउन. Raise your hand once you're done. Waiting for Rishita now. Okay, see here. We'll write Hess's law. So actually, Hess was the scientist who gave the idea that we can use the enthalpies of different reactions if the starting and the ending product is starting and the ending states are same. So the Hess's law, it states that the enthalpy change for a reaction is same whether the reaction occurs in one step or multiple step. ठीक है. Also, concisely we can say delta H is independent of path. Therefore, it is a state function.
All of you done, guys? कर लिया? सबने कर लिया. आमना, नोहा, रिश्ता wrote these two points. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आप लोग लिखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. Enthalpy of solution, it is shown as delta H naught solution. So let us suppose you have NaCl. When 1 mole of NaCl solid, it is dissolved in water, it forms Na plus aqueous plus Cl negative aqueous. Now, since this is a single step thing, we can calculate and determine the value of an enthalpy of solution. Like whatever enthalpy change is happening in this process, that is enthalpy of solution. So what we need to do, we need to first of all break sodium into sodium positive gas plus Cl negative gas. ठीक है? After this, now this particular, when you have Na solid, NaCl solid, and we are converting into Na positive and Cl negative gas state, this is lattice enthalpy, delta H naught lattice. Na positive plus Cl negative to Na positive aqueous and Cl negative aqueous. What is happening? We are hydrating it. Water molecules are coming and they are hydrating the sodium and Cl negative. So this is delta H naught hydration. ठीक है? So delta H naught solution, we can say that it is equal to delta H naught solution. It is equal to delta H naught lattice plus delta H naught hydration. ठीक है? Please write this down. अब इसके बाद मेन टॉपिक का स्टार्ट होगा. Hamna, Nuha, and Rishta, raise your hand if you're done. Waiting for Amna and Rishita. Amna is also done. चलिए. Now, जो main topic है thermodynamics का, that is very interesting topic. That thermodynamics, it also answers like why anything happens. You don't have to write anything. Why anything happens. ठीक है? कोई भी चीज क्यों होती है? So first of all, I will give you a very small example. और उसके बाद we are going to generalize things. ठीक है? Let us suppose you have something like this. There is a block of iron and you drop it. Drop in the sense आपने बस you have stopped holding it. So what would happen? It would fall down. ठीक है? It would fall down. This is the ground. Now, when I ask you guys, Amna, Noha, and Rishita, like why did it fell to the ground? Then you guys will say that because of gravity. Make sense, everyone? Amna, Noha, and Rishita? Yes, sir. Because of gravity. है ना? But let us try to think
gravity though it is outside the system right now because we are observing the iron block. ठीक है? If you are observing the iron block, then that iron block पे gravity लग रही है. That makes sense, completely makes sense. But still gravity is outside the system. Makes sense? Yes or no? Tell me. सिस्टम के अंदर तो ग्रेविटी Yes. नहीं है. ठीक है? Yes. So, सिस्टम में क्या चेंज हो रहा है? You have to think in that term, है ना? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो सिस्टम के चेंज का हम लोगों को पढ़ना है. लाइक बाहर की वजह, आउटसाइड द सिस्टम देयर आर सम थिंग्स हैपनिंग ऑब्वियसली, एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड would do something inside the system also. That is why some change occurs. So can you think like what changes for the system? You guys know, I mean, it is not something that you have learned in this standard. You learned about this in the 9th standard, I would say. सिस्टम का क्या चेंज हो रहा है? ब्लॉक ऑफ आयरन का क्या चेंज हो रहा है? When it is above the ground it has something, when it is on the ground it does not have that. क्या ऐसी चीज है? शायद कुछ आप लोगों को पता लगे, याद आया हो. ये सामना जोर से बोले प्लीज. Mass. मास. अरे मास क्या ऊपर नीचे गिर जाने के बाद मास नहीं रहता क्या किसी चीज का? आपका मास नहीं है? आप जब से उछलते तो मास होता है. हाँ आमना, मास कैसे होगा? मास नहीं होगा ना. थिंक थिंक थिंक, और लॉजिकली सोचे ऐसा. More Yes, gravitational force, I think. what what is it? Nothing, sir. नथिंग. ओके ठीक है, चलिए अभी हम कुछ लिखेंगे, आप लोगों को शायद कुछ आइडिया लगे. दिस इज h height above the ground. It is h height above the ground. नहीं याद आया ये भी कुछ? अरे रे रे रे, सोचो भाई सोचो, आना चाहिए अब तो, आंसर आना चाहिए. जब ग्राउंड के ऊपर आती है चीज, इफ इट इज एच हाइट अबव द ग्राउंड, इफ समथिंग इज अबव द ग्राउंड, इट हैज समथिंग. इट हैज समथिंग. क्या होता है उसके पास? बोलो भाई क्या होता है? अरे रे रे, ओ माय गॉड. चलिए ठीक है. रियली सैड टू ब्रेक दिस फॉर यू गाइस. Force. जोर से सही नहीं बोलिए. स्पेस बार दबा के तो प्लीज आप लोग माइक मत ऑन किया कीजिए, ठीक है ना? आई डोंट नो वेदर जूम के पास अगर ये मतलब होता ना ऑप्शन ऑफ करने का स्पेस बार वाला, तो हम ऑफ ही कर देते हैं. माइक टर्न द माइक ऑन प्रॉपरली एंड देन आंसर. यस ऋषिता, व्हाट डिड यू से? Force. फोर्स नहीं रे भाई. लाइक व्हेन इट इज एच हाइट अबव द ग्राउंड इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, and potential energy which is equal to mgh. That means I will say the potential energy right now it is greater than zero. Right now when it is in the ground, on the ground, it has potential energy that is equal to zero. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो. Yes, sir. ठीक है. Now let us suppose that this potential energy was, एक नंबर इसको देते हैं 10 joules. ठीक है, it was 10 joules. Now if I see the change in energy, then you can see that final minus initial, finally it is having 0 and initially it is having 10 joules. So the change in energy, it is equal to how much? It is equal to minus 10 joules. That means if automatically something is happening, if something is happening on its own, then for sure the system's energy, energy of system decreases. And when energy of system decreases, generally speaking, what happens? That process is happening on its own. Can I generalize it right now like this? Yes, sir. ठीक है. आप उस तरह से बहुत सारी चीजों के बारे में सोच सकते हैं. चलती हुई चीज रुक क्यों जाती है? चलती हुई चीज जब रुक जाती है, then what is the change?
That's happening on its own, right? It's stopping on its, not on its own, I will say. मतलब उसमें human intervention नहीं रहता है. Human does not have to do any work. But वही चीज आप सोचिए अगर, if I have to take a brick and I have to put it above the ground, if I have to hold it h height above the ground, then that would require work. ठीक है, तो ह्यूमन की पर्सपेक्टिव से हम बात करें. सो इफ समथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, इसका ये मतलब है कि आदमी का कोई वहां पे दखल नहीं है. दैट मींस देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन. मेक सेंस आमना, नुहा एंड रशिका? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब ये तो एक, I mean, this is one type of things. There are one type of process or one type of change that happens on its own. There is another change that can happen on its own. ठीक है, उसके लिए ध्यान दीजिएगा जरा. We have taken a adiabatic wall. मतलब हीट और वगैरह कुछ भी यहां से आगे पीछे जा नहीं सकता. ठीक. एंड आई हैव हियर अ आयरन रॉड, एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ आयरन रॉड, जिसको हमने क्या किया है, दिस पोर्शन ऑफ द आयरन रॉड आई हैव हीटेड इट टू 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, सो और तेज कर देते हैं ना. सपोज 500 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नाउ दिस इज द पॉइंट ए, एंड लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट बी. ठीक. आफ्टर अ वाइल सोच के बोलिएगा ना, ऐसे तुक्का मत लगाने की कोशिश कीजिएगा. लॉजिकल है बहुत. अगर आप मतलब गाँव के बच्चों को आप उठा के बोले ना, तो वो भी वहां पे सही जवाब दे देते हैं इन सब चीजों का. ठीक है ना. मतलब राइट आंसर रॉन्ग आंसर ढूंढने की इसमें मत रहिएगा. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द टेम्परेचर, बस यहाँ पे पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं, ए और बी है. नाउ आफ्टर सम टाइम, ठीक है, लाइक आफ्टर सम टाइम, हीट इस बॉडी, इस सिस्टम के बाहर तो नहीं निकल पाएगा. इट इज इनसाइड अ कंटेनर which is adiabatic. That means heat cannot pass from system to surrounding. Whatever heat is inside the system, that will stay inside the system. बस ये आयरन का रॉड है. आप बताइए आफ्टर सम टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन. द टेम्परेचर ऑफ A and B is as before. If it does not change, is constant. ठीक है. यानी कि ए वाला 500 डिग्री सेल्सियस था, बी वाला मान लो 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना, एक्सट्रीम केस ले रहे हैं. बी में आपके पास है टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस, 500 से ज्यादा हो गया, एंड बी ऑल्सो इंक्रीजेस. थर्ड ऑप्शन इज टेम्परेचर ऑफ ए डिक्रीजेस एंड बी ऑल्सो डिक्रीजेस. सी डी ऑप्शन इज टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस एंड बी डिक्रीजेस. And the last option is, let us suppose temperature of A decreases and B increases after some time. Tell me which is the correct option. A, B, C, D, E. में कौन सा सही है? Temperature of A decreases and B increases. Make sense? आमना एंड रशिता सही है? क्या ख्याल है? आमना एंड रशिता. This is iron rod. अरे Yes, iron rod sir. में make sense ना? Amna, what about you? Make sense that, but Yes, this is sir. 500 degrees Celsius. Slowly, what will happen? This whole iron rod will be heated up. So, this whole iron rod will be heated up, and if the heat is transferring from the A point to the B point, then the temperature of A would decrease and the temperature of B would increase. ठीक. Now, this is also happening on its own. Make sense? Yes or no? Amna, Noha, and Rashita. Yes, Yes, sir. sir. Is the Yes, sir. is the energy of system changing? क्या ख्याल है? क्या सिस्टम की एनर्जी चेंज हो रही है? आमना, नोहा एंड ऋषिता, क्या ख्याल है? बोलिए. No, sir. नहीं ना, एनर्जी. दैट मीन्स there are some process, some changes which can happen even when the energy of system is not changing. ठीक है. तो यहां हो क्या रहा है? ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, व्हाट आई से इज द डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी. बोल सकते हैं, बहुत लॉजिकल है कि नहीं? डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी. मेक सेंस? एनर्जी फैल रही है, एंड एनर्जी का फैलना भी कैसा है? एनर्जी का फैलना भी अपने आप होता है. आमना, नोहा, रिश्ता. मेक सेंस? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है. Yes, Yes, sir. sir. अब इसी चीज को क्या बोला जाता है? इसी चीज को बोला जाता है एंट्रोपी.
ठीक है. सो when energy is getting dispersed, जब आपका एनर्जी डिस्पर्स हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है. ठीक है, जब कोई चीज डिस्पर्स हो रहा है उस टाइम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. एंड उसका अगर रिवर्स हो रहा है तो एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग. ठीक है, समझ में आ गया एंट्रोपी क्या होता है, समझ में आ गया सिंपल टर्म्स पे. आमना नो है रिश्ता, ऐसा नो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है ना. एंट्रोपी पढ़ा था क्या स्कूल में आप लोगों ने? पढ़ा था एंट्रोपी या नहीं पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir. क्या पढ़ा था स्कूल में, कुछ याद है? 9th class में नहीं, but 9th क्लास में पढ़ लिया था आपने? no, the teacher, he always used to teach the things that would come later. So I अच्छा remember 9th, something from then. अच्छा 9th में एंट्रोपी पढ़ाया था आपको. क्या बोला था उस टाइम 9th क्लास में, क्या बोला था 9th क्लास में? खैर यही पढ़ाया जा सकता है, इजी कंसेप्ट है ये तो. पता नहीं, sir. I don't remember. I just अच्छा remember the word entropy. अच्छा, यू जस्ट रिमेंबर. आमना एंड नोहा इन 11th अभी तक पढ़ा है एंट्रोपी आप लोगों ने? Yes, sir. क्या पढ़ा है एंट्रोपी? एक वर्ड जनरली एसोसिएट किया जाता है एंट्रोपी से, दैट इज रैंडमनेस. आप लोगों को भी सिखाया गया क्या रैंडमनेस? Yes, sir. रैंडमनेस भूल जाइए रैंडमनेस पे, है ना. ऐसे भी कुछ समझ तो आता नहीं रैंडमनेस से, है ना. एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम. क्या फायदा, क्या फायदा भाई, एंट्रोपी इज रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम. क्या कुछ क्या ही लाइक, ये तो फ्रेज मतलब एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है ना. एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, बड़े बड़े किताबों में भी लिखा हुआ है, बट इट कोई सेंस ही नहीं है इस बात का. क्या सेंस है इस बात का? इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस. लेकिन हाँ, एग्जाम में आएगा तो यही लिखिएगा आप लोग, आमना नो है रिश्ता. ठीक है, एग्जाम में आया व्हाट इज एंट्रोपी तो डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी मत लिखिएगा. दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ साइंटिस्ट, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ, नॉट ऑल्सो साइंटिस्ट बट आई वुड से दैट केमिस्ट्री टीचर्स, ये डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी बहुत छोटे मतलब छोटा तबका है which call entropy as the dispersion of energy. ठीक है, there is very small number of scientists who call entropy as the dispersion of energy, but I really feel it is very logical. Same मतलब all of these everything is same. रैंडमनेस जो लोग कहते हैं और जो डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी कहते हैं, एक्सप्लेनेशंस वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है. ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह भी यही देके वो रैंडमनेस आपको बोलेंगे, बट दिस इज वेरी लॉजिकल कि आप अगर किसी चीज को गर्म रखेंगे धीरे धीरे एनर्जी फैल जाती है, और ये चीज अपने आप हो रही है, एनर्जी का यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, एंड दिस इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर एंट्रोपी इज डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी, और इस तरह से आप अगर आगे की कंसेप्ट को समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा. ठीक है, एंट्रोपी इज डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट अस टॉक अबाउट समथिंग दैट इज यूनिवर्स. ठीक है, यूनिवर्स. अगर हम यूनिवर्स को एक सिस्टम बना लें, इफ वी आर ऑब्जर्विंग द यूनिवर्स, देन आउटसाइड द यूनिवर्स तो कुछ है ही नहीं. समझ में आ रही है? बोलो, सही है ना. Yes, sir. यूनिवर्स के बाहर Yes. कुछ है क्या? नहीं, यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं. तो यूनिवर्स आई कैन से इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, तो यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्स किसी मतलब ना सराउंडिंग, इसका तो सराउंडिंग नहीं, यूनिवर्स का कैसे कोई सराउंडिंग हो सकता है. ठीक है, तो यूनिवर्स इज अ कंप्लीट थिंग एंड इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स की एनर्जी ना ही बढ़ सकती है ना ही घट सकती है. मेक सेंस? ये सुनो, आमना नो है रिश्ता. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? एनर्जी का डिस्पर्जन. डिस्पर्जन ऑफ, Uh, हाँ exchange बोलिए. or like transfer? ट्रांसफर नहीं हो सकता ना, ट्रांसफर तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है. सी वट एवर वॉज हैपनिंग इन दिस रॉड, है ना, वट एवर वॉज हैपनिंग इन दिस रॉड, द सेम थिंग आई कैन सी नॉट एग्जैक्टली अप्लाई इन द यूनिवर्स, बट जेनरिक मतलब अगर जेनरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं तो उसी तरह की चीज होगी कि डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी विल हैपन इन द यूनिवर्स. दैट मीन्स एंट्रोपी विल इंक्रीज. एंट्रोपी विल इंक्रीज ऑफ द यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. If anything happens in the world, anything happens in the universe, why it happens? Because it can only happen if the entropy of universe is increasing.
ठीक है, थोड़ा आप इसको मतलब ना, भले यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज है, माय गॉड सर क्या कह रहे हैं इतने आसानी से, लेकिन थोड़ा सा इसको समझिए इस तरह से, दिस इज ऑल्सो आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज ऑल्सो आइसोलेटेड सिस्टम। क्या यहाँ पे ऐसा कभी हो सकता है कि 0 डिग्री जो बी का टेम्परेचर है और घट जाए, ए का टेम्परेचर बढ़ जाए, हीट ऊपर उल्टा जाने लगे, ऐसा हो सकता है क्या? टेल मी। No, sir. No, sir. नहीं ना, ऐसा अगर होने लगे तो हम बोलेंगे एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, दैट मींस एनर्जी जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में और आता जा रहा है, इट इज गेटिंग कंसंट्रेटेड इन वन पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कंप्लीटली लॉजिकल, वो हो ही नहीं सकता है। सो नेचुरली होना क्या है, नेचुरली होना डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी, इंक्रीज इन एंट्रोपी। नाउ वट एवर हैपेंस इनसाइड, मतलब हम अब ये छोड़ दे रहे हैं कि क्या हो रहा है आयरन रॉड में, आई डोंट नो वट एवर इज हैपनिंग, आई डोंट नो वट इज ऑल्सो हैपनिंग, but whatever is happening will lead to increase in entropy, that much I can say. Whatever is happening in the iron rod would lead to increase in entropy. Similarly, since universe is also isolated system, energy का decrease और increase हो नहीं सकता है, that means only whatever is happening in the universe, no matter whatever is, क्या कोई मतलब नहीं, ठीक है, no matter what is happening in the universe, that should lead to increase in entropy. If there is anything happening, I would say nothing can happen in the universe which would decrease its entropy because it is unnatural. वो हो ही नहीं सकता है. So whatever happens, it leads to increase in the entropy of universe. That means किसी भी चीज के होने के लिए बस एक कंडीशन है, ठीक है, किसी भी चीज के होने के लिए बस एक कंडीशन है. What is that condition? The condition is increase in entropy of universe. Increase in entropy of universe. बात समझ में आई? Yes or no, please tell me. इतना समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. ठीक है. What is the criteria? कोई भी चीज के अपने आप होने की, नॉट ह्यूमन इंटरवेंशन, है ना, ह्यूमन इंटरवेंशन की बात नहीं हो रही है, नेचुरल प्रोसेस की बात, नेचुरल इन द सेंस जो चीज अपने आप होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है. सो द क्राइटेरिया फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन इज व्हाट, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स शुड इंक्रीज, ठीक है. एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस व्हिच हैपन ऑन इट्स ओन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, दे आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी. प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? Spontaneity. So spontaneity basically it is a study of the things that happen on its own, or rather it is the study of answering the question why anything happens in the universe. So write the topic spontaneity. Spontaneity. Please write a spontaneous. अच्छा, spontaneous को बिल्कुल आप लोग you are not going to confuse it with fast. Spontaneous का मतलब फास्ट नहीं होता, spontaneous का मतलब सिर्फ क्या होता है, अपने आप होना, दैट्स इट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीड राइट नाउ, ठीक है आमना, नोहन, ऋषिता, मेक सेंस? Yes. ठीक है. Yes, sir. Spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency. You write criteria for spontaneous process. The only criteria is what? Entropy of universe should increase. ठीक है. अब हमारे पास एक नया वर्ड आया है, दैट इज एंट्रोपी, है ना. एंट्रोपी क्या होता है इसको लिख लीजिएगा. मतलब हम देखिए, आई एम वेरी मच लिमिटेड बाय दी एनसीईआरटी, है ना. हम आपको समझा तो सकते हैं लेकिन नोट्स में हम लिखा नहीं सकते, है ना, वो सारी चीजें. एंट्रोपी अगर आपसे कोई पूछे तो हाँ, वो क्या लिखना है आपको, लिखना है इट इज मेजर ऑफ
randomness of a system. ठीक है, measure of randomness of a system. But we know that हम लोगों को क्या पता है in brackets, मतलब हमारे लिए ये is the measure of energy dispersion in an isolated system. Then everyone is going to please tell me. Ruby, तक लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Rishita, what did you say? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Please see. Entropy. क्या करता है entropy? Now we have to talk about the change in entropy because it is a measure of. We are seeing that the criteria is entropy of universe should increase. Increase का मतलब change. So we have to also talk about how to quantify the change in entropy. How to quantify this energy dispersion. ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा. We are having two different systems. लिखने की जरूरत नहीं है. Let us suppose in this system we have ice. ठीक है, ice है आपके पास. तो ऑब्वियसली इस सिस्टम में टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, एंड वी हैव अ सिमिलर अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सब कुछ सेम है. वी हैव वेपर्स एंड द टेम्परेचर हियर इट इज लेट अस सपोज 1000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होंगे? वेपर्स होंगे. ठीक है, नो, दोनों में चेंज करते हैं. व्हाट चेंज? आई एम गिविंग दिस क्यू अमाउंट ऑफ हीट एंड आई एम ऑल्सो गिविंग दिस क्यू अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, and I gave it Q amount of heat and which increased the temperature from 0 degree Celsius to let us suppose 100 degree Celsius. तो यहाँ पे भी I have given the same amount of heat, तो the temperature increase will be 1100 degree Celsius. Make sense till here? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, sir. What would happen to the ice at 100 degree Celsius? Melting. It melts. Boiling हो जाएगा, है कि नहीं? It would हाँ. become vapor, right? Yes or no? बोलिए guys. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे. And what would happen to the gases here? कुछ खास चेंज होगा इसमें? Tell me. The क्या colder air will go down and the hotter air will go up. नहीं, ये सिस्टम पूरा वही है. आई मीन ऐसा नहीं कि 1000 डिग्री सेल्सियस और 1100 डिग्री सेल्सियस दो डिफरेंट टेम्परेचर है. सिस्टम इज नाउ एट वी हैव गिवन सम हीट ना, सो द टेम्परेचर इंक्रीज टू 1100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट सिस्टम्स. ये एक सिस्टम अलग है, ये दूसरा सिस्टम अलग है. ठीक है रिशिता? Yes, sir. ओके, इफ यू गाइस, इफ एनी वन ऑफ यू इज राइटिंग, प्लीज डोंट राइट. ठीक है, जनरली ये सारी चीजें कंफ्यूजन होता है जब आप लिखने लगते हैं. लिखिए मत अभी प्लीज, ध्यान से सुनिए सिर्फ. ठीक है, सो आई कैन से दैट 1000 डिग्री सेल्सियस में जो एनर्जी होगी इसकी और 1100 डिग्री सेल्सियस में जो एनर्जी होगी, द एनर्जी विल नॉट बी वेरी मच डिफरेंट, राइट? दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी. एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट हियर ऑल्सो इट वाज इनिशियली वाज गैस एंड नाउ ऑल्सो इट इज व्हाट? गैस. ठीक, यहाँ पे वी कैन से दैट नो सिग्निफिकेंट चेंज, नो सिग्निफिकेंट चेंज. बट इफ यू लुक एट our ice,
the water molecules were concentrated in one particular area. ठीक है? Now these water molecules, all of these water molecules, they have certain energy with them, and as you heat it and they convert themselves to gaseous form, what is happening? There is dispersion of energy, because each molecule, it would have some energy, and right now initially at 0 degrees Celsius, the all the energy was concentrated in a very smaller volume. When you heated it, that energy, it dispersed into a larger volume. So can I say that large dispersion of energy took place in this case? Yes or no, please tell me. क्या ख्याल है? Yes or Yes, no, sir. guys? ठीक है. Now, large dispersion of energy took place. That means I can say the entropy of the system. The entropy of the system, it is inversely proportional to temperature. है ना? अगर आपके पास टेम्परेचर कम है, तो एंट्रोपी इंक्रीज ज्यादा करेगी विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट. है ना? क्यू हीट यहां भी दिया, क्यू हीट यहां भी दिया. ठीक है? विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट गिवन, द एंट्रोपी चेंज इज हायर वेयर द टेम्परेचर वाज लो. मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वन मोर थिंग वी कैन राइट. अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर आपको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया है, एंड दूसरे केस में हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा के 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो डेल्टा एस वुड आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. जितना ज्यादा आप हीट देंगे, उतना ज्यादा वहां पे क्या होगा? डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी होगा, उतना ज्यादा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा. राइट? सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. है ना? हमारी 100, अभी जैसे 100 दिया है तो इतना है. 100 नहीं देके अगर हम इसको सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करते, देन इट वुड हैव बीन जस्ट लिक्विड. और लिक्विड होता तो सिर्फ इतना ही तक डिस्पर्स हो पाता. राइट? इट वुड हैव मेल्टेड एंड इट वुड हैव बीन डिस्पर्स लाइक दिस. So at that case, the energy dispersion would be low. So if I am giving lesser amount of heat, the energy dispersion low है. So I can say that entropy, it is also directly proportional to Q. ध्यान दीजिएगा. That means I can write delta S, it is equal to Q by T. Now a specific point here, it is that this Q, it is generally taken as reversible, कि बहुत slowly आपने उस चीज को heat किया है. ठीक है? So you will write first of all delta S is equal to Q reversible divided by temperature. रिवर्सिबल का मतलब तो वही है ना, बहुत धीरे धीरे आपने क्या किया? उसको हीट किया. राइट दिस डाउन. डन. Q is equal to sorry, delta S is equal to Q reversible by temperature. Yes, sir. ठीक है. अब ध्यान दीजिए जरा. We just saw right now that criteria for spontaneous processes, entropy of universe should increase. Entropy of universe होता क्या? Delta S of universe will be equal to the entropy change in the surrounding plus the entropy change in the system. सराउंडिंग प्लस सिस्टम से ही क्या बनता है? या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे जाके हमको मदद बनेगी. एक ही चीज है ये, सिस्टम प्लस सराउंडिंग. ठीक है? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज व्हाट? द एंट्रोपी चेंज इन द सिस्टम प्लस द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग. अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया, दिस वैल्यू, दिस होल वैल्यू, इट शुड बी ग्रेटर देन 0. इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव में होना चाहिए. है ना? विच इज इक्वल टू डेल्टा एस. इस पे एक काम करते हैं, एक और चीज बोल सकते हैं. क्या बोलते हैं? डेल्टा एस टोटल बोलते हैं. ठीक है? डेल्टा एस टोटल, it should be greater than 0 for spontaneous process. अच्छा, अब दूसरी चीज यहां पे ना क्या है, देखिए, when we learn about thermodynamics, then what we are observing only the system. सही है? या सुनो प्लीज टेल मी. आमना नो है रशिता, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था. Yes, sir. तो अब देखिए डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग को ना, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के पास, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन सच अ फॉर्म, इसको सिस्टम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा.
ठीक है, बिकॉज वी आर ओनली ऑब्जर्विंग सिस्टम, सिस्टम के ही सारे मेजरमेंट्स हम लोग को करने हैं, देन हाउ कैन वी हैव अ फॉर्मूला इन विच सराउंडिंग का कोई चीज मेजर हो रहा हो, है ना? वी कैन नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर द सराउंडिंग बिकॉज वी आर ओनली एंड ओनली ऑब्जर्विंग द सिस्टम। अब इसके लिए छोटा सा समझ लीजिए, आप ट्रिक टाइप का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज योर सिस्टम, ठीक है, क्या है ये आपका सिस्टम। नाउ लेट सपोज सिस्टम इज गिविंग आउट 20 जूल ऑफ एनर्जी। 20 जूल ऑफ एनर्जी क्या क्या सिस्टम ने बाहर दिया, किसको दिया? सराउंडिंग को दिया होगा, ठीक है। इफ इट इज गिविंग 20 जूल तो सिस्टम के हिसाब से क्या बोलेंगे? -20 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन, -20 जूल्स। यस और नो प्लीज टेल मी, सही है? Yes, sir. I can say that enthalpy change of the system is equal to -20 joules. एंड enthalpy change of surrounding के हिसाब से अगर आप देखें तो सराउंडिंग को 20 joules मिल रहा है, that means there is an increase of 20 joules in the system, sorry, in the surroundings energy. Make sense? Yes or no please tell me. सही है? अरे हाँ यार, बोले भाई। Yes, sir. Yes, sir. And so I can say in general, ये तो 20 और -20 + 20 तो हमने ले लिया किस वजह से? बिकॉज समझाने के लिए। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग will be equal to negative of delta H सिस्टम। अगर सिस्टम वही एनर्जी ले रहा होता, सिस्टम का होता +20 और सराउंडिंग हो जाता -20। दैट मीन्स माइनस साइन इज जस्ट देयर टू चेंज द साइन। अगर सिस्टम का -20 तो सराउंडिंग का +20 हो जाएगा, सिस्टम का +20 तो सराउंडिंग का -20 हो जाएगा। मेक सेंस? चलिए ये सुनो, क्या ख्याल है? बात समझ में आ रही है? दिस पॉइंट, Yes, sir. पॉइंट समझ में आ रहा है ना? मैथमेटिकली वी कैन से दैट साइन चेंज करने के लिए मैथमेटिक्स से माइनस लगा दो, ठीक है? किसी चीज का साइन चेंज करना तो क्या लगा दो? माइनस लगा दो, ठीक? तो also the delta S of surrounding will be equal to whatever heat is there, Q जो है, Q for किसका? Q surrounding का, divide by T. This is the formula for entropy. Q of surrounding I can write it as delta S of surrounding. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Q of surrounding जो होगा ना, the heat of surrounding, it is equal to minus of delta H of system divided by temperature. समझ में आ रही है? सर प्लीज टेल मी गाइस, क्या ख्याल है? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग प्लग इन करते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग को यहाँ पे। सो आई कैन राइट, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइड बाई टी। सही है? क्या ख्याल है गाइस? मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस टी से सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा -t डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू -t डेल्टा एस, बिकॉज यहाँ भी सिस्टम है, यहाँ भी सिस्टम है, आई एम जस्ट कीपिंग डेल्टा एस। हम लोग सिस्टम की बात करें, अब सराउंडिंग खत्म हो चुका है यहाँ से। नाउ माइनस टी इंटू माइनस दिस थिंग, टी टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यू हैव प्लस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। बस उसको रीअरेंज कर ले हम, तो हम लिख सकते हैं -t डेल्टा एस टोटल will be equal to delta H of the system minus T delta S of the system. ठीक है? Now, since this value here, delta H of system minus T delta S of system, this is going to give you the T into entropy of the system, which is going to give you whether a reaction can happen, whether a process can happen or not happen. This whole thing is being given a term that is known as delta G. इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? गिब्स फ्री एनर्जी। अब ध्यान से देखिएगा जरा, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस,
फर्स्ट पार्ट ए से उससे पहले डेल्टा एस टोटल कैन नॉट बी नेगेटिव। बात सही है? यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, कभी कम हो ही नहीं सकती है। या तो ऐसा हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस और घट के -5 हो गया और इसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी 100 डिग्री सेल्सियस की, है ना? मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, हीट का ट्रांसफर 0 से 100 हो रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना? यू रिमेंबर, यस और नो? दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई डेल्टा एस कैन नॉट बी नेगेटिव। मेक सेंस, यस और नो? क्या ख्याल है? Yes, sir. एंड ध्यान से, टेम्परेचर ऑल्सो कैन नॉट बी 0। डज दिस मेक सेंस या नहीं मेक सेंस करता है? टेम्परेचर कैन नॉट बी 0। क्या ख्याल है आमना, नोहा, रिश्ता? हो सकता है टेम्परेचर 0? Yes, sir. हो सकता है नोहा, हो सकता है टेम्परेचर 0? No, sir. No, sir. Yes. व्हाट अबाउट नेगेटिव? कैन नॉट बी नेगेटिव। टेम्परेचर नेगेटिव हो Yes, sir. सकता है? नेगेटिव हो सकता है? No. नहीं हो Yeah, सकता। it can. नेगेटिव हो सकता है? Temperature, right? हाँ, टेम्परेचर। आप लेकिन सोचिए, ठीक है, सोचिए इस बारे में, सोचिए 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 सोचिए। 0 का मतलब होता है होना या नहीं होना। क्या मतलब होता है 0 का? 0 का क्या मतलब नहीं होता है? हो नहीं होना। ठीक है। अब सोचिए, आपको जाके किसी ने बोला, ठीक है, तो एक तो नहीं होना हो गया ना, नहीं होना तो फिर भी ठीक है, कई बहुत सारी जगहों में नहीं होना इज पॉसिबल। आपको नेगेटिव का मामला सोचो ना यार, मेजर कर रहे हैं आप किसी चीज को, यू आर मेजरिंग समथिंग एंड इट इज नेगेटिव, हाउ इट इज पॉसिबल? अभी छोड़िए, आप समझ लीजिए इसको इस तरह से कि ये बहुत पुराने जमाने में आपको जाके बोला किसी ने कि जाओ जाके देखो कितनी बकरियां हैं, है ना? बकरियां रखते थे पहले लोग, है ना? अभी भी गांव में बकरियां रखते हैं। जाके देखो कितनी बकरियां हैं, सब आई कि नहीं आई वापस, है ना? बकरियां जनरली आप उनको छोड़ देते हैं, वो फिर जब सूर्यास्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तब वो वापस आती हैं। ठीक है, तो जाके गिन लो। आपने बोला -5। क्या बोला आपने? आपने नहीं बोला 5, 10, आप बोल रहे हैं -5। सोचो तो, ऐसा कभी हो सकता है कि सोचो इसको, है ना? मतलब ऐसे मतलब गाली मत दो, सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, पूरा फंडा मेरा खिला दे रहे हैं, क्या मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता क्या कुछ? सोचो लेकिन इस बारे में। यू वेंट एंड मेजर्ड समथिंग, यू वेंट एंड मेजर्ड समथिंग, और फिर आके आप उसको बोल रहे हो कि नेगेटिव है। ये हो कैसे सकता है? कोई चीज नेगेटिव में मेजर कैसे हो सकती है? 0 है तो वो है ही नहीं। अगर टेम्परेचर 0 हो गया यानी कि टेम्परेचर है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो ये जो नेगेटिव टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज द फॉल्ट ऑफ द स्केल। स्केल का फॉल्ट है। बात समझ में आ रही है? डिग्री सेल्सियस जो स्केल है ना, वो स्केल का फॉल्ट है। दैट इज वाई केल्विन में 0 भी नहीं होता है, एब्सोल्यूट 0 इज नॉट पॉसिबल। आप ध्यान दीजिए, अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अगर टेम्परेचर को आपने 0 रख दिया ना, तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। और कोई चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका वॉल्यूम 0 हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। मेक सेंस, यस और नो? अब बात समझ में आई आमना, नोहा, रिशिता, की टेम्परेचर कैन नॉट बी नेगेटिव, एटलीस्ट हमारे क्लास में। Yes, sir. क्लास के बाहर जाएंगे तो ऐसा मत बोलिएगा कि नेगेटिव नहीं होता है, फिर ऐसे समझाने नहीं पाएंगे आप, है ना? फिर आप लोग अभी तो आप मतलब हमारी बात मानते हैं, आपको पता है कि हाँ सर को ज्यादा पता है, तो इसलिए आप मेरी बातों को मान लेते हैं और ऐसे अजीब सवालों के भी आपके बारे में सोच लेते हैं कि आप किसी चीज को मेजर करने जा रहे हो और वो नेगेटिव कैसे हो सकता है ना? इसके बारे में आप कम से कम थोड़ा हिम्मत करके सोच रहे होंगे कि सर बोल रहे सोचने के लिए कुछ तो होगा इसके अंदर, भले आपको बात समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, है ना? लेकिन आप किसी को समझाइएगा, बच्चे हैं अभी आप तो, है ना, फिर बोले अरे पढ़ा लिखा जाहिल बोलेंगे फिर, है ना? एक टर्म यूज होता है पढ़ा लिखा जाहिल। ठीक है, तो बाहर मत बताइए किसी को। बट टेम्परेचर कैन नॉट बी नेगेटिव, ना ही डेल्टा एस विल बी नेगेटिव, ना ही टेम्परेचर विल बी नेगेटिव। अब ये बताइए, दिस वैल्यू टी इंटू डेल्टा एस, टी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डेल्टा एस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस होल थिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, होल थिंग विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। उसके आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव साइन। ठीक है, उसके आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव साइन। दैट मीन्स आई कैन से माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल
will always be negative. Make sense? क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमेशा क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव मिलेगा. एंड इफ माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज नेगेटिव, देयरफॉर delta G for spontaneous process will be negative, क्योंकि यही क्या है? माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा जी. अभी ऊपर से चला गया क्या कुछ कुछ? हाँ ऋषिता, आमना ऊपर से चला गया. आमना, ऋषिता, नुहा, आराम से देखिए पढ़िए ना. ऐसा बिल्कुल हम आपको कुछ लाइक अगर आपको लग रहा है ना कि हमसे ज्यादा सवाल करेंगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला. आप एकदम बिल्कुल खोद खोद के पूछ सकते हैं. एमएससी के हमने 2 साल इसी में लगा दिया था. थर्मोडायनेमिक्स, यू मे नॉट नो, थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही नहीं था. आई डोंट इवन नो व्हाट वाज थर्मोडायनेमिक्स इन 11th स्टैंडर्ड. तो हाँ, दैट वाज गुड एक्चुअली बिकॉज मेरे पास गलत कंसेप्ट नहीं. सो बीएससी में जब आए तो बीएससी में व्हेन वी वर टॉट इन अ वे दैट सबको थर्मोडायनेमिक्स आता है, उस तरह से पढ़ाया जाता है ना बहुत सारी चीजों को. तो आई डिड नॉट आल्सो पिक टू मच. पढ़ दिया आपने. एमएससी में आई गॉट टाइम. In Corona, I got time in MSc during MSc. And during MSc, हम घुस गए फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग. तो इसमें तो बिल्कुल आप एक एक चीज पूछ लीजिए हमसे कंसेप्चुअली. और भाई मतलब थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स, जिंदगी का खेल है भाई थर्मोडायनेमिक्स. आप सोचो, यूनिवर्स जो है आइसोलेटेड सिस्टम, जो कुछ भी हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी, डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी. यहाँ अभी मतलब ये समझ लो, ये आयरन बार है ना, आयरन बार अभी यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है. एक टाइम तो ऐसा आएगा ना दैट all each and every part of the iron rod will have same temperature. And when each and every part of the iron rod will have same temperature, each and every part of the iron rod when it will have the same temperature, उसके बाद कुछ नहीं होगा. There can be no change. Whatever change is happening वो तभी हो रहा है जब तक 200 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक मूव कर रहा है हीट. और यही मूवमेंट में आपकी जिंदगी चल रही है, यूनिवर्स के तौर पे बता रहे हैं. इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्स, जब ये हीट ट्रांसफर खत्म, खत्म यूनिवर्स. No, sir. नो, क्या नो? नॉट रिशिता, नहीं होगा I खत्म. mean, I thought that was a question. Never mind. आई एम सेइंग दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. जैसे ये लाइक वट एवर यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी एनर्जी है वो धीरे धीरे अगर डिस्पर्स हो गई, देन देयर कैन बी नो चेंज हैपन. आई मीन इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट स्टिल. All if you're done writing, yes or no? Yes, sir. ठीक है. You'll write next. Gives free energy. ठीक है. So G it is given as H minus Ts. ठीक है. And delta G it is given as delta H
minus T delta S, है ना, as we have seen right now. Delta G is delta H minus T delta S. Now you will write next effect of temperature on delta G. Effect of temperature on delta G. ठीक है, ध्यान रखिए जरा. डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ठीक है. सो जब डेल्टा G आपका, if डेल्टा G is negative, then the process will be spontaneous. और जब डेल्टा G होगा पॉजिटिव, the process will be नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस. सो हियर वी आर गोइंग टू मेक टेबल. टेबल में आपके पास होगा डेल्टा H, you will have delta S, you will have temperature, you will have delta G, and we will comment about the reaction that is going to be spontaneous or non spontaneous. ठीक है. तो स्टार्टिंग में देखिए जरा, डेल्टा H नेगेटिव है आपके पास, डेल्टा S पॉजिटिव है. ठीक है, डेल्टा S पॉजिटिव है and the temperature is high temperature. Now what is the value of delta G? ध्यान से देखिए, डेल्टा H is negative, T delta S is positive, that means minus T delta S will be negative. तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा G क्या होगा बताओ. आपके पास देखिए इस तरह से ना, नेगेटिव कोई नंबर ले लो -2, यहाँ पे क्या आपके पास माइनस, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर ले लो 4. ठीक है, तो क्या आ गया, -2 -4 विल बी इक्वल टू, टेल मी हाउ मच, -2 -4 बोलो भाई, जल्दी बोलो. -6. -6. तो हमेशा नेगेटिव रहेगा ना, मेक सेंस, Yes, sir. है ना. Yes, हाई sir. हाई टेम्परेचर भी ले सकते हैं. हाई टेम्परेचर भी क्या रहेगा, इट विल बी डेल्टा G विल बी नेगेटिव एंड रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, है ना. नेगेटिव, पॉजिटिव, इवन एट लो टेम्परेचर. ठीक है, तो जैसे -2 और -1 कर दो, इससे लो है ना, कंपेयर टू डेल्टा H, आई एम टेकिंग द T डेल्टा S वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा. ठीक है, सो हियर आल्सो इट इज नेगेटिव, इट विल बी स्पॉन्टेनियस. मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी. बात समझ में आ रही है, Yes, sir. बोलो भाई. Yes. ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, दूसरा केस लेते हैं, जब आपके पास इसका अपोजिट केस लेते हैं ना, डेल्टा H इज पॉजिटिव और डेल्टा S नेगेटिव. ठीक है, एट हाई टेम्परेचर ले लेते हैं. हाई टेम्परेचर पॉजिटिव में ले लीजिए आप, कितना 5. ठीक है, डेल्टा H इज पॉजिटिव तो 5 माइनस T डेल्टा S में हाई टेम्परेचर. ठीक है, नेगेटिव है एंड इट इज हाई, हाई मतलब 5 से ज्यादा ले लो, -8 ले लो. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5 + 8 ना, दिस विल बी व्हाट, पॉजिटिव. मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी. बात समझ में आ रही है, Yes, बोलो sir. बोलो बोलो. यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा G विल बी पॉजिटिव, तो इट विल बी व्हाट, नॉन स्पॉन्टेनियस. नाउ व्हेन यू हैव डेल्टा H पॉजिटिव एंड डेल्टा S इज नेगेटिव, टेम्परेचर इज लो, तो -5, यहाँ पे 5 है, -8 की जगह ले लीजिए, कम कर लीजिए टेम्परेचर को, तो -2. ठीक है, सो हियर आल्सो इट इज व्हाट, 5 + 2, देन आल्सो इट इज पॉजिटिव. तो टेम्परेचर हाई रहे चाहे लो रहे, इस केस में डेल्टा G इज गोइंग टू बी व्हाट, पॉजिटिव, एंड द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. मेक सेंस, यस और नो. बात समझ में आ रही है, Yes, sir. पक्का ना. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केस, जब आपके पास बोथ ऑफ दीज आर नेगेटिव, डेल्टा H भी नेगेटिव है और डेल्टा S भी नेगेटिव है, और टेम्परेचर भी लेते हैं हाई टेम्परेचर. ठीक है, डेल्टा H क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव ले लेते हैं, -5. ठीक है, माइनस, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हाई है, डेल्टा S भी नेगेटिव है, माइनस टेम्परेचर हाई, -8 कर दो. अब क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा G, -5 + 8 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो. Positive. पॉजिटिव, है ना. तो डेल्टा G विल बी पॉजिटिव, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. सेम केस लेते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव बट द टेम्परेचर इज लो. लो टेम्परेचर में 5 से कम कर दीजिए इसको, 5 से कर दीजिए कम, कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए. ठीक है, 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 -5 + 2, व्हाट विल बी दी आंसर, डेल्टा G क्या हो जाएगा,
टेल मी। Negative. नेगेटिव -3 है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा एंड द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अगला केस लेते हैं, हियर यू हैव पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव, लेट अस टेक हाई टेम्परेचर। पॉजिटिव लेना है यानी कि लेट अस टेक डेल्टा एच एज +5। डेल्टा एच को लिया हमने पॉजिटिव ना, तो +5 प्लस नहीं प्लस नहीं माइनस, माइनस टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा 8 ले लेते हैं। 5 - 8 विल बी -3, नेगेटिव होगा, मेक सेंस? बोलो भाई। Yes, sir. स्पॉन्टेनियस है ना। लास्ट केस पॉजिटिव, पॉजिटिव, लो टेम्परेचर, देन लो टेम्परेचर में क्या करें, इसको 5 -2 कर देते हैं, है ना। बोथ ऑफ दीम आर पॉजिटिव, 5 - 2 क्या हो जाएगा, +3, मेक सेंस? Yes, sir. दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। छापो। इस टेबल को ना दोबारा एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा खुद से।